Welcome, everybody. Welcome to this online satsang. I'm resuming this online satsang after a long time. Usually we do in person. So, how many of you think, just with your hands up, overthinking is a problem and it's a cause of stress? Hmm? How many of you think? Everybody, 100%. Have you guys fallen in love with a person or a situation? Do you think about that person all the time? Isn't it? When you fall in love, what happens? You keep thinking about that person or a project. Suppose you have one very favorite project in your work or some in-house. I have my gardening project going on these days. I think about it all the time. Does it cause stress? No. So overthinking is not a problem. What is a problem then? It's the content of your thought is the problem. For people doing Tattva Bodh, it will be a revision. So, but for rest of you, we'll just do a little anatomy and physiology of where the thought happens, okay, and why overthinking can become a problem if it's not flowing in the right direction. I did my master's thesis here in Canada, so my topic was neuroscience. During my master's, I was working in a neuroscience lab basically, and we used to train stroke patients, head injury patients with different repetitive activities like simple video games or some balance training. And we also used to tell them to visualize. So my lab was very interesting, and my professor was a part of a very big project. At that time, I'm talking about how many, more than 20 years back, he had some video games made for stroke patient, very simple, like ping pong games and all those things. And we used to tell them to visualize to hit the target and what they're going to do. We used to find a lot of improvement, that repetitive thought process and activity, and that is called neuroplasticity in neuroscience. Plasticity is the ability of the brain to modify. My professor gave me a deadline to create like 6 different surfaces which will challenge balance of patients, okay? And we made a big walkway, like a 6-meter walkway, in which that the surface that I made, and those surfaces emulated outdoor surface, like it was a slippery surface or it had some balance disturbing surfaces. So I made 6 surfaces which was hidden somewhere in the walkway. The subject used to walk on that, and then when they hit the surface they used to lose balance but they never fall because we had harness system, and we had like 6 camera system which were capturing the image, and also they had accelerometer which kind of lot of data collection. Okay, that's what it is. I was thinking I was more than a physiotherapist, I was more like a software engineer by the end of my thesis, because I had to cut the data with the software and analyze each and every body part and then present like what happens when we encounter some balance issues. So same thing in life, when we encounter some mental balance issues, when the mind is not stable, what happens? Where does it affect us? I teach Vedanta, as you know, most of you. So Vedanta is nothing but the science of self, okay? And a very important part of Vedanta is something called Atma Vichar. Atma Vichar means it's a technique. So Vedanta is a roadmap for knowing yourself. When you study a map, you have to go somewhere. So when you study Vedanta, you have to practically apply those things in life. So whatever you're learning here, you should practically apply those things in life, okay? Thinking is not a problem because mind will always think. Mind has 4 faculties. And these all I have taught in something called Tattva Bodh. Tattva Bodh is a basic book of Vedanta. Vedanta is made up of 2 words, Vedas and Ant. So wherever there's a final teaching of Vedas, it's called Vedanta. And Bhagavad Gita is also part of Vedanta. When I actually studied neuroscience in my master's and then I studied Bhagavad Gita, I found so much of similarity because first 5 chapters of Bhagavad Gita is just about mind. And in Upanishad, they say that Man eva manushyanam karanam bandha mokshayoho. That means mind alone is the reason for human bondage or liberation. Either you suffer because of your mind, you're happy because of your mind, nothing else. So suppose something is giving you stress, and mind will always be stressful because of some situation or the other if you think about the stress. But there's a very important faculty given to us in mind. Mind in Sanskrit is called manas. Another faculty of mind based on the function is called buddhi. Buddhi is the one which decides whether I have to follow this thought or not. So buddhi can actually redirect your thought to some other thing. Okay, suppose something is bothering you constantly. You can tell your mind that no, I don't have to think about this. I have to think about something else right now. Or redirecting to a particular best methodology our rishis have given is mantra chanting, or what we did right now, some kind of japa. Best way to train your mind, to redirect your mind. Whenever his mind is running away, chant something. Bring it back to the present moment. And chanting is so powerful because it's a sound energy. It also regulates your breath. And you're going from like A, B, C back to A, B, C. And mind likes movement.
Mind likes movement because mind is movement, okay? Mind is compared to Vayu in Bhagavad Gita. Like Vayu never stops, right? It always moves. So mind is always moving. You cannot stop mind. You can stop mind only when it's in coma, okay? Or you're in samadhi, okay? That is very far. Both the situations. We are not there. We don't live in that situation all the time. We live in our daily life. So when your mind can get concentrated at one point, and so have a mantra for yourself, have a some kind of image which is a point of your concentration. And then whenever your mind is running again, bring it back to your point of concentration or point of meditation. So that is why if चिंता से चिंतन करना है, चिंता में नहीं रहना, you have to, चिंतन means contemplation. So you have to bring your mind always to a present moment. Best way of present moment is either focus on your breath or on the mantra chanting. So never try to stop the mind. You have to redirect the mind. And remember always, mind likes movement. For example, if you're standing in front of the ocean, your mind gets very relaxed, isn't it? Why? Because you're only seeing water, but it's constant movement built into it, isn't it? The same water assumes the shape of the wave, and that kind of, you're tricked, your mind is tricked into seeing something constant, yet moving. That's why we feel relaxed. Same in front of a bonfire. Suppose you're in front of a very big fire, like Holika Dahan ho raha hai, aisa kuch hai fire. That sound, that image of the fire, it's constantly moving, but it's fire. That's why you get relaxed. So that is why never think that my mind is overthinking. Bring it back. Mind is like a toddler. It will always run away either to the past or the future. Your job, okay, as a caretaker of the mind, as the owner of the mind, to bring it back to the present moment. That's what is yoga. Yoga with the present moment. That's why it's called present. It's a gift. The present moment is a gift. More you practice this, more you try to keep your mind in the present moment, over a period of time, you'll find that thoughts are not bothering you. Gradually, they, go on a backside. You plan, you become a better planner, and you make wise decisions. How will you measure your progress? You'll measure your progress like same situation 6 months back gave you stress. Now it's not giving you stress. That's how you measure your progress of your mind. The same person was bothering you 6 months before. Now you're okay, whatever. Because you have trained your mind to be in the present moment and not get bothered by others' actions or behavior. Okay? Unnecessary. Where you have to take action, you have to take action. Passivity is not encouraged in our culture. Okay? So remember that. But wherever, if somebody is even not agreeing with you, you won't get that much agitated. You will change. Your mind will change gradually. You'll find that it's not worth, So gradually you'll become more mindful. You'll choose your words, choose your actions more mindfully when you start living your life in yoga. So yoga is not just on the mat. It's actually outside mat is more important in the life, what you do with these teachings. And if you want to start studying Vedanta, you can start with the Tattva Bodh, and we are starting the second batch of Tattva Bodh in September. One batch is going on right now, but we are almost at the end. So if you're in the group, you'll get the message to enroll into that, and it's free. There's no charge for Vedantic teachings or satsang, because this is the teaching for humanity. This is teaching for your mind to make you a better version of yourself every day. Any questions so far? Archana ji, your analogy is very good. Like what happened 6 months back, how it will stop bothering you in course of time, right? And I guess the message is like just focus on the present and don't worry about the past nor the future. Yeah, because past is dead. If you keep thinking about past, you'll go towards, you'll also become past soon, because you'll get disease soon. Those who keep dwelling in the past, they get high blood pressure, tension, due to tension. When someone says something, we shouldn't be responding, something like that. I may not be putting it across in the right way. But sometimes what happens is, let's say, even if we ignore them, but end of the day, let's say someone said something, someone did something to me, and with a little consciousness, I let it go, though it's bothering me, and I've been thinking about it maybe for a day or two. But somehow, if I forget that also, later on, what remains is the hurt. I mean, this is what I've observed.
that somewhere the hurt remains. I mean, this is again personally in my case, it's a God's gift, but I end up forgetting. Like if I say I fight with my wife or my sisters or my parents or whatever some time ago, in couple of minutes or in an hour, I actually end up forgetting what was the reason for the fight, but that hurt kind of remains. This is just giving an example. So how do we let go of that hurt, that which actually keeps bothering? Very, very good question. Anybody has a similar question? Just with hands up or anything? Yeah, you have, yeah. Same question? Yeah, okay. What happens is our mind is like a fixed vessel. घड़ा होता है ना पुराने ज़माने में विलेज में जो फिक्स्ड होता था ज़मीन पे, ठीक है? उसके अंदर अगर गंदा पानी चला गया, मिट्टी चला गया, तो उसको उल्टा नहीं कर सकते थे, करेक्ट? So how do we change the water of that ghada? By adding fresh water on top. Keep adding, keep adding, keep adding till that dirty water comes out completely. So mind is also like that. Something has gone inside, it won't come out. Your hurt is there. Because remember, our mind is a sukshma sharir. It's a chemical in our brain and the body. That chemicals come down in each and every system of our body. So suppose you get hurt, your heart may feel heavy, okay? Or you may get some stomach upset also with hurt, right? Sometimes people get all those diseases because of long-term hurt or guilt or anger. You cannot do anything about it. What you have to do is you have to keep doing good practices on top, like meditation, pranayam. Pranayam is very good. What I found is Kapal Bhati, Kapal Bhati that we do, or Bhastrika, the energizing pranayams, very, very good for cleaning your mind. It's like a mental cleansing. So Kapal Bhati, early morning, after you clean yourself, sit, and when you do your puja, first do Kapal Bhati. Start with 2 minutes every day. It's a must for everybody. Kapal Bhati. When you keep adding good practices and reading, so Vedanta gives you a technique called Atma Vichar. I just said, right? Who is getting hurt? You'll always find a relationship is getting hurt, right? A husband is getting hurt, a son is getting hurt, father is getting hurt. So you always a relationship, you're not your relationships, you're just playing a role. So if you read all those things, practice yoga, do pranayam, and keep doing that self-introspection, Atma Vichar, gradually over a period of time, ये सब bother नहीं करेगा. कोई कुछ भी बोल दिया, doesn't matter. ऐसा हो जाएगा लाइफ. कोई कितना भी अपमान कर दे, लेकिन हमारे ऋषि बोलते हैं जहाँ धर्म की बात आती है, धर्म की हानि होती है, वहाँ पे उठ के लड़ाई करना है, युद्ध करना है, वहाँ पे चुप नहीं रहना है. लेकिन जब हमारे मान अपमान की बात आती है ना, वहाँ पे डजेंट मैटर कर देना है. अपने धर्म के इसमें कोई बाधा भी डाल रहा है, somebody is putting obstacle for you in doing your own duty, उसको ख़त्म कर देना है, रास्ते से हटा देना है. ऐसा हमारे ऋषि कहते हैं. ठीक है, धर्म के बीच में कोई नहीं आना है, अपना बच्चा भी नहीं आना है, अपनी पत्नी भी नहीं आनी है, कोई नहीं आना है. करना है तो करना है. आई हैव टू डू माई ड्यूटी. जैसे कोई आपको ही टॉन्ट मार रहा है कि सुबह उठ के योगा क्यों कर रहे हो, सबको परेशान हो रहा है ना, समथिंग लाइक दैट. आई एम जस्ट गिविंग अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. सुबह सुबह उठ के ओम की आवाज़ आ रही है आपके, है ना, या लाइट जल रहा है, बाथरूम जा रहे हैं, सबको परेशान हो रहा है. करना है तो करना है. तुम भी उठो सुबह, लव इट और वॉट हेट इट, आई डू इट, राइट. बच्चे का सेम एग्जांपल देती हूँ. बच्चों को डायपर चेंज करना पड़ता है, करना है तो करना ही है ना. बच्चे कितना भी रोएं, आपके ऊपर सुसु कर दें, करना है तो करना है. उसी तरह जहाँ धर्म की बात आती है, धर्म मतलब ड्यूटी से है, उसमें खड़े होकर करना है, डट के रहना है. उसमें फिर तितिक्षा करनी है. तितिक्षा इज अनदर टर्म फ्रॉम तत्वबोध, विच मीन्स तितिक्षा मतलब होता है बेसिकली सहन करते हुए अपनी ड्यूटी करते रहना. उसमें चिंता विलाप ये सब नहीं करना है. बहुत ही सुंदर डेफिनेशन है वो संस्कृत का, आदि गुरु शंकराचार्य का. सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितीक्षा निगध्यते. इतना सुंदर है. सहनम सर्व दुखानाम, जैसे सुबह उठना है उसमें दुख हो रहा है, या रात में, जैसे आपके धर्म के बीच में लोग आपको बहुत बाधा भी डालेंगे. चलो लेट नाइट मूवी देखते हैं, बैक टू बैक, वीकेंड है, क्यों सुबह उठ के योगा करना है. लेकिन नहीं, जब मैंने डिसाइड कर लिया मुझे जो करना है तो करना ही है. वंस इन ए वाइल चलता है, बट नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस. इट शुड बी लाइक 80-20 रूल. थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी लाइफ में चलता है क्योंकि गृहस्थ जीवन में हम लोग, है ना. बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू शुड बी, सजगता रहनी चाहिए. मुझे अपना धर्म पूरा करना है. सबसे पहले अपने शरीर का धर्म. वो हर्ट आप ये धीरे धीरे ना कम होता जाएगा जैसे जैसे आप रियलाइज करते रहेंगे कि आपका पर्पस क्या है. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, घर में बच्चे का बर्थडे होता है या बेटी की शादी होती है ना, किसी की शादी है, मान लीजिए आपकी बहन की शादी है, थोड़ा बहुत शोल्डर पेन होता है तो उसको याद रहता है क्या? नहीं याद रहता ना, क्योंकि आपके पास बिगर गोल है कि नहीं. बारात की तैयारी करनी है, ये करना है, वो करना है ना. ये छोटे मोटे एक्स एंड पेन्स ना लाइफ में चले जाते हैं जब का गोल बहुत बड़ा होता है लाइफ का. लाइफ में एक बहुत बड़ा गोल रखिए.
फॉर योर सेल्फ, पर्सनल गोल बोल रही हूँ। आपको क्या चाहिए? व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर ओन लाइफ? व्हाट यू वांट टू, हाउ डू यू वांट टू सी योर सेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ? व्हाट डू यू वांट टू डू इन लाइफ? कैसे खाओ पियो ऐश करो, जॉब जाओ आओ थक के ट्रैफिक में मर मर के ये करो वो करो, ऐसा चाहिए लाइफ या कुछ और चाहिए? यू नो, यू हैव टू थिंक फॉर योरसेल्फ। सो योगा की टीचिंग्स, वेदांत की टीचिंग बहुत ज़्यादा आपको आत्मविचारक बनाती है ना, कॉन्टेम्पलेशन सिखाती है। वन ऑफ द मेथडोलॉजीज कि लाइफ को सर्विस में नहीं जीना है, अच्छा डीप जीना है। हम कुछ भी क्यों कर रहे हैं उसका भान होना, उसका मन में रहना कि क्यों कर रहे हैं। इज इट समथिंग वर्थ डूइंग और नॉट? कि बस पार्टी ऐसे ही कर रहे हैं, बस ऐसे ही कर रहे हैं, कुछ मिल भी रहा है उस पार्टी से, मतलब व्हाट एम आई अचीविंग? फन भी करना है, फन के साथ क्या हो रहा है बस। फिर वो बहुत एक्चुअली डीप स्टडी है। खुशी भी 3 टाइप की होती है, राजसिक, तामसिक, सात्विक, वो अभी मैं नहीं बता सकती इट विल बी टू डीप। बट व्हाट आई वांट टू से इज एनी एक्शन दैट यू डू, ओके, इवन इफ यू गो एंड मीट अ फ्रेंड, लाइक यू गो टू अ पार्टी, व्हाट इज योर एंड गोल? ये सब सोचने के लिए योगा वेदांत आपको बाध्य करती है। फिर उसमें क्लैरिटी आती जाती है लाइफ में कि मेरे को क्या चूज करना है लाइफ में, मुझे किसके साथ उठना है, किसके साथ बात करना है, किसको रिप्लाई करना है, नहीं करना है ना, इज इट वर्थ इवन डूइंग दैट? तो जैसे जैसे आप डीप घुसोगे योगा में आपको ये सब क्लैरिटी आती जाएगी और वो हर्ट अपने आप चला जाएगा एक दिन। आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा इफ यू कीप एडिंग गुड वाटर फ्रॉम टॉप, विद गुड प्रैक्टिसेस। The reason why I asked is, as you mentioned, with respect to hurt, कि वो रह जाता है और उसका इफेक्ट बॉडी पे पड़ता है, अलग अलग पार्ट्स पे दिक्कतें आना शुरू हो जाता है। तो आई एम गोइंग थ्रू द सर्टेन फेज, सो आई वांटेड टू गेट rid of it because it causes a lot of impact. Thanks for that. साइंस पढ़ा है ना हाई स्कूल में? लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी करके एक होता है जिसमें होता है स्टेट ऑफ डिसऑर्डरलीनेस। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, मतलब कोई भी फिजिकल मैटर, Okay. एंट्रोपी इज द टर्म, एंड कोई भी फिजिकल मैटर गोज टुवर्ड्स डिग्रेडेशन। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि दूध Oh, निकाल के रख दो, दूध खराब हो जाएगा। अगर गैस को खुला छोड़ दो, गैस उड़ जाएगा, है ना? तो बिल्कुल। एंट्रोपी। तो हमारा माइंड है ना, माइंड इज ऑल्सो अ सटल फिजिकल मैटर। माइंड हमेशा नीचे ही जाता है, वो माइंड का नेचर है। So that's why when you understand your mind, mind is nothing but chemicals running between your neurons, nerve cells. That's all it is. Okay? तो केमिकल है ना, वो प्रोड्यूस हो चुका है आपका स्ट्रेस का, वो है, वो ऐसे निकलता नहीं है। इट्स लाइक एक पानी के अंदर आप नेल घुसा दिए, हाँ, नेल को हाँ पानी में हाथ डाल के निकालना पड़ता है तभी वो निकलेगा ना, अदरवाइज नहीं निकलेगा, वो रहेगा ही वहाँ पे। तो वैसे ही स्ट्रेस का केमिकल्स है, वो हाथ डाल के तो हम निकाल नहीं सकते, उसको फ्लश आउट भी नहीं कर सकते। कैसे? एक ही तरीका निकालने का, अच्छी प्रैक्टिस डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ। कुछ भी हो, माइंड को प्रेजेंट मोमेंट लो। किसी दिन बहुत ही गुस्सा आया, गो फॉर अ रन, 1-2 किलोमीटर रन करके आ जाओ, या 108 सूर्य नमस्कार कर लो। बॉडी को थकाना है। थकाने से क्या होता है, अच्छे हार्मोन्स डेवलप होते हैं और वो जाके वो स्ट्रेस हार्मोन्स को रिप्लेस करेंगे। बॉडी में तो उतनी ही जगह है हार्मोन्स की जितनी होनी चाहिए तो चाहे तो वहाँ पे स्ट्रेस हार्मोन रहेगा, चाहे तो हैप्पी हार्मोन्स रहेगा। तो उस बात का याद ध्यान रखना है कि आई हैव टू चेंज माई केमिकल्स बाय माई ओन सेल्फ, कोई और नहीं आके करेगा, क्योंकि वो सेल्फ जनरेट होता है। और इसको लोग यूजली फिर स्ट्रेस होता है तो चाहे तो बिंज वॉचिंग करने लगते हैं मूवीज़, या शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। उससे क्या होता है ना, शॉर्ट टर्म एंडोर्फिन्स क्रिएट होता है, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। तो दैट्स अ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, बैंडेड सोल्यूशन है। प्रॉपर सोल्यूशन है पूरी तरह उसको हटा देना, सर्जिकल स्ट्राइक करना। योगा आपको सर्जिकल स्ट्राइक सिखाता है, वेदांत तो पूरा धड़ाशाही कर देता है माइंड को। तो इसीलिए यू बिकम अ हैप्पी बीइंग, यू एमिट हैप्पीनेस ऑल ओवर, है ना? यानी यू आप डीप घुसते हो योगा में तो फिर वो धीरे धीरे बीमारी भी चली जाती है, जो भी है आती है। शरीर है तो बीमारी तो आएगी, बट वो सेल्फ इंड्यूस बीमारी नहीं आएगी कि स्ट्रेस ले रहे हैं सोच सोच के। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चंस? Archana ji, I wanted to add something to what you said and the question he asked. I think we all go through this. I've gone through this कि बेकार में बहुत ही mental stress लेना, किसी के बारे में दुखी होना, get hurt and all that. मगर मुझे लगता है कि I think the first step is stop the fights. जब फाइट होगा तो तभी फिर गुस्सा आएगा, फिर हर्ट होगा, कुछ बोलेंगे कुछ। तो I think what I have experienced through Mokshadham and what I have learned from Vedanta is कि कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोच। And also जैसे अर्चना जी ने बोला identity, right? What's your identity? Like if your identity is like you're an employee, तो ऑफिस में कुछ हो गया तो you get very disturbed and somebody says something. Same with if you're a wife and if your husband says something or your mom. So I think हम काफी अपने आइडेंटिटी से बहुत ये हो जाते हैं, then that's when you start getting very hurt.
तो फिर जब आइडेंटिटी से थोड़े बाहर हो जाते हैं, then I think everything, like Archana ji said, you start practicing those things, it becomes so much easier. I wanted to thank Gayatri for a different perspective. Gayatri is going to start the second batch of Tattva Bodh actually. She is one of our teachers who will start Vedanta teaching. Like I said, give yourself a big goal, okay? And second thing, give yourself a big vision also. कि हम कौन हैं, क्या हैं? पूरे ब्रह्मांड में धरती पे हम हैं, उसमें धरती कहीं जा रही है हवा में. Every time you touch a space coordinate, it's not the same space coordinate. We are always changing, right? We are constantly moving. The galaxy is expanding. Earth is always moving, isn't it? दूर से देखेंगे ना तो क्या छोटी चीज़ के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं ऐसा लगता है मुझे. लाइक इफ यू हैव अ बिगर पर्सपेक्टिव ऑफ लाइक ये ब्रह्मांड कहाँ जा रहा है, यू नो, उसमें हमारा इतना छोटा सा लेके चीज़ बैठे हुए हैं, छोड़ो यार बस बहुत हो गया. लेकिन उसमें फिर ऐसा नहीं सोचना है कि मैं अपनी ड्यूटी करूँ, सोता रहूँ, ऐसा नहीं. ड्यूटी अपनी करनी नहीं, तो जो ड्यूटी नहीं करता है ना प्रॉपर अपना, वो सफ़र करता है एक्चुअली. एंड स्ट्रेस इज बिकॉज ऑफ वी हैव नॉट वर्कड ऑन आवरसेल्फ. इट्स सिंपल एज दैट. हमारा अपना जनरेटेड है, स्वजनित है स्ट्रेस वो, क्योंकि हमने अपने ऊपर काम नहीं किया. क्योंकि दिस इज़ नॉट अ नॉर्म इन आवर एजुकेशन सिस्टम. कोई नहीं सिखाता ये हमको सोचना कैसे है. सब सिखा देंगे पैसे कैसे कमाना है, प्रोजेक्ट कैसे बनाना है. कोई सिखाता नहीं है कि सोचना कैसे है. लाइफ स्किल्स है ये, सोचना, रिस्पॉन्ड करना सिचुएशन से. एक्चुअली क्या होता है ना, आपके यहाँ पे हमारा छन्ना रहता है, एक फिल्टर यहाँ पे फ्रंटल ब्रेन में हमारे तीन. अब ये बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, आज नहीं बात करती इसकी, नेक्स्ट टाइम बात करती हूँ. हाँ तो नहीं, कल भी मैं ही क्लास रही हूँ, कल हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है. I'll tell you about different parts of brain and then how we respond. Okay? कल भी न्यूरोसाइंस का थोड़ा लेक्चर लेंगे. न्यूरोसाइंस इज वेरी फैसिनेटिंग एंड इट्स सो सिमिलर टू व्हाट वेदांत टीचर्स. इफ यू लाइक साइंस एंड यू हैव एन इंक्विजिटिव माइंड, मतलब रैशनल माइंड है, थिंकर हैं आप और क्वेश्चंस आता है, यू मस्ट स्टडी वेदांत.